this person in bringing that upliftment in the society and bringing that kind of depth and equality in multiple sections was extraordinary. A work that he did, despite, I believe, most odd things that happened to him. तो शायद किसी ने प्रोबेबली उनका पूरा कभी बायोग्राफी या हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, या उनके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी रिसेंट पास्ट में आए थे जो टीवी पे दिखाए जाते थे, अगर किसी ने देखे हो तो. देर इज अ लॉट दैट ही वेंट थ्रू एंड देर इज अ लॉट दैट ही एडेड टू द सोसाइटी, एंड आई थिंक उसके बीच में एक उनकी जो इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस एंड एट द सेम टाइम करेज उनमें जो थी और रेजिलियंस थी टू ऑलवेज फाइट in all the possible difficult situations was something so ordinary that he was able to reach to the point where he could contribute so big to this country. So आप चाहे सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सीए के लिए कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग दैट जॉब, गेटिंग दैट सर्विस, गेटिंग दैट डिग्री. इट्स मोर देन दैट. It's about bringing difference to this country. It's about bringing difference to the society. So while you just do a service or a job, it's not just that or a profession. It should be more than that. You should be able to contribute to the society. But if only you keep that mindset today, will you be able to, think in that manner? And your targets and goals will become more easily achievable. When the, goal is bigger, it's not just aligned to you yourself, but more than that, it automatically starts to resonate in you that this is comparatively easy and this makes sense to be working hard on. तो चाहे सीए वाले हो, इस चीज को समझो कि इतनी ही जिंदगी नहीं है कि बस एक डिग्री ले ली है और उसके बाद जिंदगी में आगे बस अपना करते रहेंगे. इट्स मोर देन दैट, फॉर विच आई लाइक टू पुश फॉरवर्ड वन थिंग जो मैं यूजुअली मैं बताना प्रेफर करता नहीं हूँ, बट मेरे खुद के जो दिल में बहुत है कि मुझे आने वाले टाइम में कुछ चीजें, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मुझे लेने हैं in terms of betterment in the society. So whenever we'll be doing that, I'll definitely reach out to most of you in terms of whosoever would feel at that point of time. If you can contribute into that in terms of your efforts, in terms of your involvement. So I think the more you are able to do that with all the zeal and all the awareness, the better this nation can become. It becomes very easy to just point out on things and say कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. Again, as the same thing. बोलना बहुत आसान होता है, जब बदलना होता है तो बहुत एफर्ट लगता है. तो उस बदलाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभी से जहन में वो रखो कि वो बदलाव लाने के लिए आपको वो छोटे छोटे एफर्ट्स अपने आसपास करते रहने हैं, चाहे वो अपने अंदर है, चाहे अपने आसपास है, चाहे अपने आसपास के लोगों में है. So while we'll be doing such initiatives, I'll definitely again, yes, like to have some kind of participation from you all someday so that it becomes a cumulative effort and it actually goes on for good long times जहां और लोग हमारे साथ कनेक्ट होते रहेंगे. Thank you so much and have a very great day all of you. Study very well. Ensure कि आज courage and resilience इस part को बहुत strong रखना, and intellectual brilliance that he had because he was so keen on having all the information, all the understanding, all the knowledge that he needed in order to fight, in order to become the best that he wanted to become for everyone else. It was not for himself, but for everyone else along with. So hold that one thing in your mind, and I think things will become much more easier for all of you. Have a great day. Ensure कि अपने hours अच्छे से fetch करना सभी. ठीक है? Thank you so much. Take care. Have a great day.